जो पवन बेग बर्तमान छिंडी विच्छिन्न हो जाइए से खुंट को आप देखिपे क्यों भाव में चित्र वर्तमान समय एठारे स्थिति उपजी गछ क्यों भाव में पवन समस्या कौन क्यों अवस्था वर्तमान विद्युत खुंट गुड़िक रही अच्छी वर्तमान समय आप देखुं केवल यही गोटे गछ नुह अन्य गछ रही जहाँ आप सीधासख आम जा स्थान गुड़ी क्यों भाव में गछ वर्तमान समय भांगी सेपटर दृश्य जदि आम देखा तो निश्चित रूपे अन्य पटे तार केमी झुली आप देखिपे विद्युत खुंटी वर्तमान समय भांगी जापटे मोर डाण पटे जदि मुझे देखी यही अनुमान करें आप क्यों भाव में जो बात्यार प्रकोप वर्तमान समय देखा एवं तार विद्युत खुंट ठारू आरंभ करी गछठू आरंभ करी डालठू आरंभ करी तमाम जिनिस वर्तमान समय छिंडी पड़ी रास्ता उपर पड़ी जहाँफल कि आम कहीपर जोगाजोग एक प्रकार विच्छिन्न होइछि किंतु ए जो चित्र बयान करुछि केते मारात्मक होई पारे ए जो बात्या बा जो फनी केते मारात्मक होइछि ताहा सीधा सड़क ए चित्र माध्यम रे जणा पडुछि एवं केउ भली भाव रे जो प्राकृतिक विपर्यय कथा कुआ जाए प्रकृतिर जो विपर्यय जतबेले करे केउ मात्रा से करिपारे ताहार सीधा सड़क नग्न चित्र आपण माने देखुचंती ये होछि सही कोणार्क एवं चंद्रभागार रास्ता जहाँ कि पुरी को जाइछि सीधा सड़क ही रास्ताटी पुरी को मध्य जाइछि तेणु वर्तमान समय यही रास्ता विच्छिन्न हो जाइछि एवं आगर मध्य आपण देखि पारुथबे एक गछ मध्य आउ एक बड़ गछ मध्य भांगी रास्ता मध्य पड़िछि केउ भली भाव में पवन बेग जहाँ रही ताकू आखि आगे रखी ये जो चित्र वर्तमान समय आपण माने देखुचंती ताहा निश्चित रूपे बयान करुछि जे फनी केते दुख दे जाइछि फनी केते मारात्मक होइछि ताहा सीधा सड़क यही चित्र माध्यम रे ही बयान करा जाई परिबो कारण प्रकृति जेतेबेले तार तांडव आरंभ करिछि निश्चित रूपे केउठी ना केउठी अनेक क्षयक्षति करिवार संभावना मध्य रहिछि जा फल कि सीधा सड़क चित्र देखि पारथुबे प्रति छक छक बा प्रति मझी मझी रास्ता रे गोटे गोटे बड़ बड़ गछ भांगी पड़ी एवं तार जो रास्ता कड़े जो बोर्ड बनाई था टूरिज्म रो बोर्ड सी भांगी पड़ी तमाम जिनिस वर्तमान समय ये केवल फनीर पवन तेणु आप सीधा सड़क से ही अनुमान करें केउ भली भाव में एठारे पवन बेग रही से चित्र आपण मैंने सीधा सड़क देखुंत कनेक्ट न्यूज माध्यम एक्सक्लूसिव चित्र केवली भाव में रास्ता विच्छिन्न संपूर्ण हो जाइए जोगाजोग बंद हो जाइए ना गाड़ी आग को जापर ना पछक जापर जो मैंने कोणार्क चंद्रभागा जावाक चाहूबे से अनुरोध करूँ जो अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने अच्छा जदि कनक न्यूज देखुं तेज रास्ता को क्लीयर करने बंदोबस्त करने को अनुरोध करूँ ये मध्यम कारण आम निजे एठार फसी रहीचु आम बाहरी पारना कि भाव में रास्ता उपर विशाल विशाल गछ जिते भांगी पड़ुची गाड़ी जापारूना तेणु निश्चित रूपे कहूँ आम तुरंत जो मैंने देखुं अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने हूँ जो मैंने अधिकारी माने अच्छी से अनुरोध करूँ जे यथाशीघ्र ये रास्ता जो रही यथाशीघ्र क्लीयर कर पारे जो साधारण लोक मैंने जो मैंने जीवा आसवा कर निश्चित रूपे सुविधा मिल जीवा आसवा गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो भाव में आकलन करा जाइथिला जे फाइलिन ठारू टिके कम एवं तितली ठारू टिके अधिका यार प्रभाव पड़ो बोली ताहा वर्तमान समय सत प्रमाणित होइछि गोटे पर गोटे सत प्रमाणित होइछि पवनर बेग कथा कुआ जाउतिला 170 रु 180 पर्यंत रहिबो 200 पर्यंत छुइबो ताहा सत प्रमाणित होइछि पवनर बेग जगु ही एई भली छारखार करि पकेइछि वर्तमान एई अंचल टिको हम जदि जेतु केवल कोणार्क चंद्रभागार जेतु हम अछंती मो एई अंचलर कथा कहूछि अन्य स्थान रे मध्य समान स्थिति आपण माने देखुथिबे केउ भली भाव रे बड़ बड़ गछ भांगी तार झुलुची तो केउठी इलेक्ट्रिक खुंट भांगी केउठी रास्ता बंद हो जाइछि तेणु वर्तमान समय आम कहीपर जिते आशा करा जाउथिला ता ठारू अधिका निश्चित रूपे केउठी ना केउठी ए जो फणी रही
आशाठू अधिका क्षति कराइब बोली अनुमान करा जाउची बा आकलन करा जाउची कारण सकाळू सकाळू पवन आरंभ हो जाइथिला एवं जहाँ पूर्वर सूचना थिला जे 8टारू आरंभ हब एवं 12टा पर्यंत चलिबो 8टारू 10टा मध्य स्थलभाग स्पर्श करिवो एवं तापरे 12टा पर्यंत ही प्रोसेस चलिबो एवं धीरे धीरे यह दुर्बल हेबो तेणु वर्तमान समय हम जे देखिबा जो भली भाव रे जेतेबेले स्पर्श करिछि भूपृष्ठ को बा ओडिसा को स्पर्श जेतेबेले करिछि सेतेबेले तार बात्यार जो कराल चित्र सामना को वर्तमान समय रे आसीछि केउ भली भाव रे धन जीवन कथा कहबा केउ भली भाव रे घर कथा कहबा गछ कथा कहबा केते केउ परिमाण असुविधा होउछि बा केउ भली भाव रे हैरान होबे जेतेबेले बात्या सरीबो स्वाभाविक हबो जेतेबेले प्राकृतिक अवस्था स्वाभाविक हबो सेतेबेले केउठी ना केउठी लोक माने ही हैरान हेबे तो ताकू आखि आगे रखी प्रशासन पक्षर व्यापक बंदोबस्त करा जायतिला किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा होची प्रकृति आगरे केही नुह प्रकृति जेतेबेले तार रूप देखैछि निश्चित रूपे क्षयक्षति घटिबो धन जीवन हानि हबो तेणु ताकू किछि करा जाय पारिबो नाही केवल केउ भली भाव रे बात्या परर दृश्य जहाँ रहिबो बा जो आकलन करा जिवो कहा परे केउ केउ स्थान रे क्षयक्षति होईछि कोन केते मात्रा रे क्षयक्षति होईछि ए तमाम जिनिस जेतेबेले आकलन करा जिवो सेतेबेले तेणु ताकू आखि आगे रखी वर्तमान समय जो भली भाव में एठारे बात्या तार कराल रूप देखई तार सीधा प्रसारण सीधा सड़क कनेक्ट न्यूज माध्यम आपण देखुंती क्यों भली भाव में बड़ बड़ गछ आम पाखापाखि ये जो रास्ता अध घंटे धरी फसी रहीचु विभिन्न स्थान में गछ भांगी केवल गोटे दुईटी गछ नुह आम जब देखा पछकू आहरी गछ अच्छी जहाँकि भांगी पड़ी रही सीधा सड़क से अनेक गुड़िए जगार गछ भांगी अनेक गुड़िए जगार गछ भांगी पड़ी रही रास्ता को वर्तमान समय बंद कर दि जाइए बंद हो जाइए प्रकृति जितेबाला तार रूप देखई जनसाधारण जितेबाला बात्या सर स्वाभाविक हम चल गाड़ी मोटर जावा आसवा जितेबाला स्वाभाविक हम से लोक मैंने हैरान न पड़ा तेणु अनुरोध करूँ जो मैंने अधिकारी मैंने अच्छा से तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ एवं ये जो रास्ता डैमेज होती क्लीयर करने उद्यम आरंभ करूँ। आपने देखिपे कोणार्क चंद्रभागा रास्तार चित्र जो गछ गुड़िक रास्ता उपरे पड़ी विद्युत खुंटी इलेक्ट्रिक पोल रास्ता उपरे पड़ी जहाँफल आमर प्रतिनिधि माने आगो को जीवा पूर्व से अटकवा पड़ी रास्ता अवरोध हो जाए कि जोगाजोग विच्छिन्न होती कहुच्छी यार भितर जो प्रशासनिक अधिकारी मैंने रही जो दायित्व दि जाइए समस्या समाधान करने रास्तार जो गछ गुड़िक रही रास्ता उपरे गछ पड़े जो क्विक एक्शन टीम कथा कहुच्छी अग्निशम विभाग अधिकारी सदस्यों कथा कहुच्छी तत्परता प्रकाश करूँ ये अपील आमर प्रतिनिधि मैंने करुँफल से आग को बढ़ी पारे और जनसाधारण को जो मैंने साइक्लोन बात्यार अपडेट खबर देखा चाहते वर्तमान समय टेलीविजन देखुं जो प्रभावित स्थान गुड़िक रही से नहीं अपडेट खबर आम से पहुंचाई पारू एवं लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही दिन 11टा पर्यंत यह प्रक्रिया जारी रही समय पूर्वर आम जो भाव में आलोचना करूँ आईएमडी एडीजी सहित श्रीजुक्त मृत्युंजय महापात्र से जो सूचना देते 1 घंटार समय रही बात्यार आखि स्थलभाग को छुईवा अतिक्रम करपानी पाखापाखि 10टा समय रही से कहला 1 घंटा अर्थात दिन 11टा समय स्थलभाग को छुईब किंतु यार प्रक्रिया सकाळ 8टारू आरंभ हो सारी दीर्घ 3 घंटा धरी यार प्रभाव देखा मिलूँ लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही विभिन्न स्थान एभली चित्र सामने आसूची जो रास्ता उपरे बड़ बड़ गछ गुड़िक उपुड़ी पड़ी कारण पवन बेगर जो देखा मिलूँ पवन बेग जो भाव में रही 175 किलोमीटर रही जाउछि प्रति घंटा बेग पुरी रे यही तथ्य सामना आसुछि वर्तमान समय पुरी रे क्षयक्षति होइथिबानी कहा जाउछि कारण दुकान गुड़िकर बोर्डिंग उड़ी जाइछि
विभिन्न स्थान में छपर उड़ी जाइए जो आजबेस्टस रही भांगी जाइए विशेष भाव में जो बस्ती अंचल गुड़िक रही उपकूल समुद्र बेलाभूमि निकट में जो पेंठकटा बस्ती रही पुरी में सेठारे किसी घर भांगी जाऊा प्रतिनिधि सूचना देते तो यार भितर बात्यार ताजा सूचना आम आपण पाखे पहुंचाऊ जो मैंने रही जो सब स्थान में कौन प्रकार असुविधा सृष्टि होगाजोग विच्छिन्न होची रास्ता उपरे गछ पड़ जाउची जफल लोक मैंने जीवा आसवा करने सक्षम हेबे नाही से खबर आम पहुंचाऊ एवं अनुरोध करुछु प्रशासनिक अधिकारी को जे सब समस्यार समाधान खूब शीघ्र करा जाऊ जाफल साधारण लोकों ठारो आरंभ करी जो प्रतिनिधि माने गणमाध्यम आज दिन तमाम एक खबर उपरे नजर रखुंट विभिन्न स्थान को जाई अपडेट सूचना देउछंती से माने मध्य यातायात करि पारबे यार भितरे एही भली चित्र सामना को आसुची आज वर्षा गत काली ठारू गोपालपुर रे पहर दिन बा बुधवार ठारू वर्षा आरंभ हो जाइतिला किंतु विशेष प्रभाव नहीं यहाँ पे पीछे क्या प्रोग्रेस हो रहा है सब प्रोग्रेस हो रहा हुआ है न्यूज़ सारी आ रही है ना कन्हैया लाल साइक्लोन चल ही नहीं रहा है इसको बंद कर दे और भाई सब बोला क्या फनी चल रहा है सनी चल रहा अच्छा 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 फानी हाँ कितना कितना जगह न्यूज लगाए इधर गोटे बात्यटी आसे समुद्र आड़ू आसिक जो स्थलभाग को छुए से तार प्रभाव देखाए तो तापर धीरे धीरे ग्राजुअली से वीकेंड हुए दुर्बल हो जाए कि बर्तमान समय तार प्रभाव देखे समय चली तो कंटिन्यू प्रोसेस 8 रु आरंभ हो सारा 11टा सुधा चलो प्राय 2 घंटा कंटिन्यू प्रोसेस जो संपूर्ण भाव बात्या आसिकी स्थलभाग में पहुंचब बर्तमान तार आखि आसी स्थलभाग में पहुंच सारा आंशिक भाव आसूची धीरे धीरे आसूची कि बर्तमान समय तार बेग बढ़ी जाइए कहया गले अत्युक्ति हेब नहीं किंतु गोटे संपूर्ण प्रोसेस टी लैंडफॉल संपूर्ण प्रोसेस टी पाखापाखि समय लगे तबे मौसम यार भितर पूर्वरु मध्ये जा कुआ जाउथि लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि एवं 3 घंटा धरि एही प्रक्रिया सीसी डालता रहता है कन्हैया को मार के सेने अपडेट खबर आम से पहुंचाई पारू एवं लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही दिन 11टा पर्यंत यह प्रक्रिया जारी रही समय पूर्व आम जो भाव में आलोचना करूँ आईएमडी एडीजी सहित श्रीजुक्त मृत्युंजय महापात्र से जो सूचना देते 1 घंटार समय रही बात्यार आखि स्थलभाग को छुईवा अतिक्रम करने पाखापाखि 10टा समय रही से कहला 1 घंटा अर्थात दिन 11टा समय स्थलभाग को छुईब किंतु यार प्रक्रिया सकाळ 8टारू आरंभ हो सारी दीर्घ 3 घंटा धरी यार प्रभाव देखा मिलूँ लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रही विभिन्न स्थान एभली चित्र सामना को आसूची जोठारे रास्ता उपरे बड़ बड़ गछ गुड़िक उपुड़ी पड़ी कारण पवन बेगर जो देखा मिलूँ पवन बेग जो भाव में रही 175 किलोमीटर रही जाऊँगी प्रति घंटा बेग पुरी में तथ्य सामना को आसूँ वर्तमान समय पुरी में क्षयक्षति होता नहीं कहुच्छी कारण दुकान गुड़िकर बोर्डिंग उड़ी जाइए विभिन्न स्थान में छपर उड़ी जाइए जो आजबेस्टस रही भांगी जाइए विशेष भाव में जो बस्ती अंचल गुड़िक रही उपकूल में समुद्र बेलाभूमि निकट में जो पेंठकटा बस्ती रही पुरी में सेठारे किसी घर भांगी जाऊा प्रतिनिधि सूचना देते तो यार भितर बात्यार ताजा सूचना आम आपण पाखे पहुंचाऊ जो मैंने रही जो सब स्थान में कौन प्रकार असुविधा सृष्टि होगाजोग विच्छिन्न होची रास्ता उपरे गछ पड़ जाउची जफल लोक मैंने जीवा आसवा करने सक्षम हेबे नाही से खबर आम पहुंचाऊ एवं अनुरोध करुछु प्रशासनिक अधिकारी को जे सब समस्यार समाधान
खूब शीघ्र करा जहाँ फल साधारण लोकों आरंभ करी जो प्रतिनिधि माने गणमाध्यम आज दिन तमाम एक खबर उपर नजर रखुंट विभिन्न स्थान को जाई अपडेट सूचना देउछंती से यातायात करें यार भितर यही चित्र सामना को आसुची आज वर्षा गत काली ठारू गोपालपुर रे पहर दिन बा बुधवार ठारू वर्षा आरंभ हो जाइतिला किंतु विशेष प्रभाव पुरी रे यार देखा मिलूँ पुरीर आखपाख अंचल प्रभाव वर्तमान समय परिलक्षित होगी 175 किलोमीटर बेगर पवन बोलुवा बेले चंद्रभागार यार विशेष प्रभाव देखा मिलूँ आम प्रतिनिधि छिड़ा हुई निजर माने छिड़ा हुई लाइव देवाई सीधा प्रसाद सीधा सड़क आलोचना आम सहित करने समर्थ होना एत तीव्र रही पवन बेग एवं ता सहित समुद्र बेलाभूमि रही धूली झड़ अन्य पक्षरे पानी कूल लंघुची समुद्र जुआर कूल लंघुवा देखा मिलूँ स्थाने स्थाने चित्र देखा मिलूँ आम प्रतिनिधि आमको किसी समय पूर्व कहते एवं पूरी कोणार्क चंद्रभागा रास्ता रे वर्तमान समय गछ पड़ जाए जहाँफल यातायात संपूर्ण भाव में ठप हो जाऊँगी कारण जो इलेक्ट्रिक खुंटी गुड़िक रही भांगी जाइए विद्युत सरबराह विच्छिन्न होती विभिन्न स्थान रे दुकान टीण छपर उड़ी जाइए घर किसी स्थान में भांगी जाइए सूचना सामना को आसुची ओडिशा उपकूल दे पश्चिमबंग मुहां हेब बात्या फनी आईएमडी एडीजी मृत्युंजय महापात्र यह सूचना देछंती एवं गत काली ठारू यार प्रभाव देखा मिलूँ गत 3 दिन हेब आम लगातार आपन को यह खबर देखाऊँ एवं एने आपन को सचेतन करने चेष्टा करूँ कारण अनेक समय लोक मानकर जो चिंताधारा रही समस्ते सबू जो बात्यार खबर को नहीं अतिरंजित कराए किंतु यार प्रभाव देखिले स्पष्ट अनुमान जो सरकार को तरफ पदक्षेप जो तत्परता स्थानांतरण प्रक्रिया उपयोगी भाव में 11 लाख लोक पाखापाखि रही 50,000 अधिक लोक रही जो बात्या आश्रय स्थली गुड़ी प्रस्तुत करा पूर्व जो लोक मैंने स्थानांतरित सेठारे रहिबे बात्या आसे आश्रय ने व्यवस्था हेलीकप्टर प्रस्तुत रही कौन प्रकाश कथा पड़े परिस्थिति सृष्टि हेले एयर ड्रपिंग सूचना रही मौसुमी महांती आम सहित जोड़ी होती मौसुमी जहाँ सूचना पूर्व आम 10टा बेले सूचना करूँ एमडी एडीजी सहित मृत्युंजय महापात्र समय आउ लगे कहला बात्या आखि स्थलभाग को छुईब वर्तमान समय पाणीपाग विभाग तरफ कौन अपडेट खबर मिलूँ केते समय आउ रही बात्यार आखि स्थलभाग छुईबा इसके बाद लोग आएंगे ना मौसमी आप सुनी पार्टी जो लोग इतने में चल रहे हैं इसके बाद जो लोग आएंगे देखना चाहेंगे उनके लिए पाणीपाग विभाग तरफ जहाँ ताजा अपडेट आसी कि बात्या फोनी आखि को आंशिक भाव छुईवा आरंभ कला मात्र 1 घंटा समय लगे जिते संपूर्ण भाव बात्या फोनी पूरी स्थल भाग को लैंडफॉल कर सूचना बर्तमान सुधा आसी सारी धीरे धीरे फोनी बात्या फोनी आखि स्थल भाग को माड़ी आसला छुईवा लगे से पूरी अधिक प्रभाव देखा प्राय पाखापाखि रही बात्या फोनी वर्षा बर्तमान समय और जो कोस्टल पार्ट में जो जिला गुड़िक रहा अन्य जो उपकूलवर्ती स्थान गुड़िक सांबादिकता जगतसिंहपुर पारादीप वर्तमान समय वर्षा जोर हो पवन जोर हो राजधानी भुवनेश्वर कथा यदि कहवा घंटा बर्तमान 100 पाखापाखि पवन बेग रही बर्तमान समय वर्षा मूसलधार वर्षा आरंभ हो सारे आपण भिजुआल अनुमान करें कि किभली भाव धीरे धीरे समय गढ़ा अनुसार बात्यार प्रकोप बढ़ुची पवन बेग बढ़ुची बर्तमान समय वर्षा लगी रही जहाँ आमको पाणीपाग मिलूला कि जेहेतु यह स्थलभाग को छुड़ी यार जो केन्द्र भाग आखि बर्तमान स्थलभाग आड़ को माड़ी आसला छुईबार लगे बर्तमान समय 8टा बेलू यही प्रोसेस आरंभ हो जाता प्राय 2 घंटा था आहरी पाखापाखि मिनिमम 11टा पर्यंत यही चलो और यही जो पाणीपाग रही वर्षा पवन ये आज संध्या सुधा एभली जार पाणीपाग आईएमडी तरफ बर्तमान समय सूचना मिली अनेक जगह
गछ भांगी पड़ जाउची वर्षा जोरे होउची किंतु जेतु पवन होउची वर्षा को उड़े कि नहीं जाउची मेघ को उड़े कि नहीं जाउची किंतु कोन रगा धीरे धीरे अधिक बर लागि जी आपण विजुअल देखि पाटिबे केते जोरे वर्तमान समय रे पवन बहिबा आरंभ करलानी मौसुमी जो पवन बेग कथा कहुच्छी मौसुमी पवन जो बेग कथा कहुच्छी स्पष्ट ये गछ गुड़ी अनुमान कर जो भाव में दौलुंट हलुंट पवन बेगर तीव्रता कहुच्छी जितेबाला बात्यार आखि स्थलभाग को छुईब जहाँ आप सूचना देखते पाखापाखि छुईब अवस्था को आसीगला अल्प समय अपेक्षा रही है स्थलभाग को छुईब तो ठीक से ही समय पवन बेग आहरी अधिक बढ़ी पारे एभली एक आशंका कर संपूर्ण भाव बात्या फोनी आखि स्थल भाग आड़क माड़ी आस संपूर्ण भाव से स्थल भाग उपर ही पलि आस बात्या फोनी से पवन बेग आहरी अधिक बढ़ विशेषकर 200 पाखापाखि पवन बेग बढ़ी पारे अनुमान कराउछि कारण वर्तमान समय करंट सिचुएशन जहाँ अच्छी पुरी 175 पाखापाखि पवन बेग रही घंटा प्रति गस्टिंग 200 ऊर्ध्व रही पवन बेग वर्तमान समय आप देखुवे हठात जोर पवन आसुची गछ भांगी दउछि तापरे सस्टेन हे जाउछि विंड फ्लो तापरे धीरे धीरे प्रति 15-20 मिनिट पुणी आउ थे बढ़ा लगुच से जो झुंक पवन गस्टिंग विंड स्पीड 200 ऊर्ध्व रही पुरी वर्तमान समय आदि सस्टेन विंड स्पीड कथा कहबा से 175 रही घंटा प्रति पुरी यार प्रकोप अधिक देखा मिलूँ कारण कि पुरी रे स्थलभाग छुईब और तापर से निश्चित भाव उत्तर पूर्व दिग को गति कर भद्रक बालेश्वर देखी पश्चिमबंग मुहां हम बांग्लादेश मुहां कि से धीरे धीरे दुर्बल हो जाए आप देखुए जिते गोटे बात्याटी आसे समुद्र आड़ आसिक धीरे धीरे ग्राजुअली से वीकेंड हुए दुर्बल हो जाए कि बर्तमान समय तार प्रभाव देखे समय चली कंटिन्यू प्रोसेस 8 आरंभ हो सारा 11टा सुधा चलो प्राय 2 घंटा कंटिन्यू प्रोसेस जो संपूर्ण भाव बात्या आसिकी स्थल यही प्रक्रिया सही सिस्टम कॉपीराइट कुछ नहीं 2-3 घंटे चला दो मदरचोद ऐसे टाइम बढ़ जाए अभी मैं किया 25 कंप्यूटर में 2 घंटे आए 50 घंटे टाइम एक दिन में बढ़ रहे हैं और को 2000 डिवाइडेड बाई 50 करो कितना होगा 2000 डिवाइडेड बाई 50 40 दिन क्या 2000 डिवाइडेड बाई 40 दिन ऐसे चला दो तो 2000 यहाँ मिल जाएगा 1000 हो ही जाएगा 3-4 हज़ार 3 महीने में सारा हमारा वो हो जाएगा एलिजिबल और 1000 सब्सक्राइबर तो गेन करा देंगे बस हमको इतना क्राइटेरिया करके मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल करना है उससे क्या होगा उससे कुछ भी तुम डालोगे वीडियो फिर तुम्हें पैसा मिलेगा जब तुम एलिजिबल हो जाओगे तब तो उसके 100 व्यू आ जाने हैं आराम से लाइक हाँ तो करेगा ये अपने साथ में शो करेगा चलती घंटा प्रति पवन 100 बर्तमान राजधानी भुवनेश्वर बढ़ी गलानी उड़े दौर पवन वर्षाटा को बर्तमान भुवनेश्वर अनेक स्थान गछ भांगी पवन गछ भांगी मोड़ी रही बर्तमान समय जदि पवन बेग एत अधिक रोचे जिते उपकूल अंचल बात्या अतिक्रम करने मुख्यतः जब आम देखा कटक जयपुर भद्रक जाऊ बालेर कथा कह समस्त स्थान में रफा मात्रा देखा मिल मंतव्य दौरान कि विभाग अधिकारी आहरी उच्च रही 200 पर्यटन तेणु आहरी 2-3 प्रतिक्रिया रखुंट पाणीपाग विभाग अधिकारी माने जेतेबेले उपकूल को छुईब बा स्थलभाग दे अतिक्रम करिबो एही बात्या परवर्ती समय भद्रक बालेश्वर दे यहाँ पवनक बुहा हब बालेश्वर रे यार देखा मिलिबो अंशिक वर्षा किंतु पवन हुई सेतेटा किंतु बेग पड़िबो कोन कहउचंती पाणीपाग विभाग अधिक पाणीपाग विशेष परिस्थिति प्रतिनिधि मान सहित जोगाजोग को कष्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट चश्मा वाला के उधर जानता है हो काफ़ी देर से कर रहा था ओपनिंग कर
आम चेष्टित रहीचु चेष्टा जारी रखु आपण मानकु एने अपडेट खबर जे आम प्रतिनिधि मध्ये हमकु सूचना देउथिले आंशिक मात्रा रे मात्र आखि स्थलभाग को छुइबा आरंभ करिछि आउ अल्प समय मध्यरे एहा स्थलभाग को छुइबा सहित अतिक्रम करिबा मध्य सेतेबेले आ परिलक्षित ହେବ पवन रो बेगरे वृद्धि आसीबो एवं पवन रो बेग वर्तमान समय रे पुरी रे 175 किलोमीटर प्रति घंटा तो किसने फोटो खींचा आपने पड़े हुए तो Okay, everyone, we're about to start our lesson maybe in 2 minutes about. So try to close when you need close. Okay, 2 minutes. 2 minutes. उसे लेते हैं दे देगा तू तू जानता है तो मालिक चल नहीं जानता रुक 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 ऐसे मांगूंगा तो थोड़ी ना देगा जाना पड़ेगा लेने तुम्हारा बात थोड़ी ना है तो कौन करेगा दूसरा ले बाबू को কিছু কিনতে চাইলে দেখতে এটা নাম তো ना क्लासे क्लास स्टार्ट हो गया বাইরে বেরোনোর দরকার নেই Okay, so let's begin the lectures in the afternoon. Okay, after I talk to the faculties, professor here, I know like you come here for a semester, right? A whole semester. I wish like every courses you all learn something. Okay, so they say that after the end of the course, not today, they will have a maybe small quiz. So like you can really see if you really learn something.
So I think the quiz will be maybe next Friday at the next 30 minutes. So during the class, probably I will point out this is very important. Then at that time, try to see that probably some point you need to know. Okay. So previously we already introduced both methods. So inductive method, deductive method. I think deductive method is effective and quick. So you have some formula assumption, and then you develop other rules and verify by some experience. So at that time, I say in the morning, if you forget everything, even forget where I come from National Chengkong University. Chengkong means success, success. You must know this equation, okay? So that means like this equation is, I thought, the fundamental of all electrostatic relationship. So electric means field. From mathematics is equal. To see what's the impact, you use the field. So they are equal. They are equal. But how do we calculate that? We use divergence operation. Because in this class we don't really have enough time. From our school, probably we have a very first maybe 2 or 3 weeks to introduce all the basic mathematical tools, vector analysis, that kind of thing. But here we probably cannot develop what kind of operations, what kind of mathematical tools you need. But you need to know this is a divergent operation. Okay. But if you see how do I do this, we can just look up books to do that. It's just partial. All these elements, partial x, partial y, partial z, this kind of thing, and then sum them together. So from divergence theorem integrate, then that's the Gaussian rule. This is some people Gauss law too, because this is point view, this is overview. Okay, then we see the summary. So in the morning, we see at the very beginning inductive experience, current law, then build up a electric field, then find aspect. Deductive method, we assume one equation. We thought this model could be true, and then we develop another electric field, divide by the material parameters, epsilon 0. Final, we just like put quantity, put some charge to test that, what happened there. Okay. Now we already think like we already know everything, right? We know this kind of field things, the charge. Then supposedly it's enough. However, from this back, we can invent operation, but in case we have other easier tool, for example, scalar tool, then the calculation be easier because we don't need to do vector analysis. Then very simple become fast. So at that time, I say we need to find some governing equation in either method, right? I say either you like inductive method or you like deductive method. You just need to know which one is the most important. I say it's governing equation. So it seems like, can we do equation? Yes, maybe. Or what I say, this is very important. If you don't know everything, you must know this. Can we use this one as governing equation? That's not bad, right? Look nice. Governing equation, the center one, right? The most important one. Okay, so we'll see after this talk. After we finally introduce this factor. Okay, so the major keyword here is scalar. So we can do all analysis from the vector field. But if we can also create other scalar aspect, that will be easier for us to do calculation. So previously we can do x, y, z, the cylinder, the sphere, a coordinate. If it's just a number, if it's just a scalar, so everything must be easier. So electric potential, you see, and then the meaning related to that energy.
of this field. If we have field, then it has an impact or release. The governing equation. The problem not only a sphere, not only it's not easy. Probably arbitrary shape. How can we come problem easily? We just see from the value problem, and with this governing equation. Is the governing equation the one we say divergence D equal to low? Not that one, because that is vector. We can the scalar. So this is the most important thing. Whole day you must know. So today you need to remember two things. The first, divergence D equal to. Second, what is the governing equation? Okay. So electric potential is a key variable in the circuit analysis. Okay, so we can formulate the basis of big fields. Okay, so that's a very important one. Actually, this potential is actually use the voltage current. For analysis, we use the V equal to I times R. The V is actually to the circuit analysis. Okay, so we'll see. Okay, so what we already know this morning from density, so it's related to the epsilon zero. So we call this D equal to epsilon E is the relation. So the equation. Okay, now here we introduce another aspect. So we introduce both aspects from inductive to or from deductive formula first, and then do. Here we just choose the second method. If we can find formula first, then we can prove technically it must be true, because we already proved the other relation. And those equations always if and only if. So the first is true, then the other must be. For us to expand our knowledge. Okay, it's equality, and it must be true, no matter what vector, what scalar you put here. So if here is a variable, no matter you put here. So for mathematician, have to do a lot of calculation. They don't know the meaning, but they say, I prove this, and but they don't need to make that any meaning. But for us, we say, if this equation is true, I already found something here. Curl the is zero. The equation must be true too. So that means this equation can be this term, right? Which are compared between two equations. So from that aspect, then we know because the curl, this means the curl of the gradient of any scalar field is identical to zero. So that E, we know E component, but it's in rotational values zero. So E this term, so we can easily write this way, right? This way. So we start from formula, but people might ask the center we use plus or negative. From mathematically, either way is true. But we try to do some experiments and making this code for us to use negative. That means we want to change the field, then the energy release. Okay. So this potential. Okay. So we can just do some calculations to see what after we do some gradient operation. Then we can find another way. You can see it seems like it is some special to derive to find change direction. Then we maybe do integration with this one like that, but exactly that way. If it's one, but it's a 3D. So we just like get this, integrate that together here, or exact. So after we check this, if that's a gradient operation, then we get this one. That's the V. So either way, you can do opposite, inverse operation, or you can just know the answer, check, do a gradient to see if that's the E by definition. Okay, so this is the R square here. This is a normalized vector, R square and then the R0. So this is R 1 over R. After derive that, it become R square, become negative R square. Okay, so we know the potential have this form. If it is the electric field,
it is R square relationship. If it is a scalar, but it is 1 over R, 1 over R. Okay, that is nice. That is nice. That's almost similar what we already know, what we already learned. Okay, but what's that important? Those equations look very easy to me, right? Look very easy to me. So is that important? Why do we learn this way? Okay, so we want to find the most crucial equation. I call it governing equation. So let's see how we can get that. Okay, so we already find this electric field intensity E and the flux density vector D. They have the constitution relation. Then we just write it again. Okay, so this is the most important. I say you need to know in the morning, and then this is the field aspect. Also, we have the curl E equal to 0. That's also from Maxwell equation. Then, based on this equation and then this identity, so E must be something scalar and the gradient that it become E. So we find that this E definition. Okay, so this is a scalar potential. Okay, then we just like put these thing together. Okay, any problem? Any problem? Okay. Okay. Now we will come out the governing equation. So maybe pay attention in 10 minutes. Within these 10 minutes, I think. Let's see. Okay. Yeah. Okay. Okay. So at the beginning, we start from the single charge, right? Single charge. Then we have its E field. That's we know the single charge, and divide by R square. And also its material constant epsilon 0 in free space. And then this term is actually the gradient of 1 over R. So this is the mathematical equation formula. And then you can also prove that. I know many of you can derive or can prove by your own. Okay, so based on here, after we do the gradient 1 over R, it becomes R squared over R vector over R squared. Okay, then we actually this one can put back in, right? So to arrive this equality, then we need to do some calculation. Okay, so that is some vector identity. Probably you can find time to practice. Okay. Okay. So after we put this back, put this inside, and we have this equation. Then eventually we can find this V equal to Q divided by 4 pi epsilon 0 1 over R. Okay. So either way, previously I say you can try to think you want to integrate this to this part, or you know the answer, then do gradient, verify that to get E. Okay, but actually you can do that one step by step. Then you can find its simple form. Okay. Then okay, that equation is actually similar, easy to me because I think these calculations are easy and the equation is also easy. One is 1 over R squared, one is 1 over R. Then what does that matter? Okay, then this slide say what this matter. We say if we have many charges, then what's the E field? That's the total E field summed together. Okay, if we have multiple charges, what's the potential? That's also easy. We just sum them together. So everything actually looks the same. Total E means some individual electric intensity field. Total scalar vector, scalar potential. That means sum up all individual scalar potential. Then they're actually the same. Then we put them together and then write the equation. Put this again. So actually they do the same thing, right? Look like similar in equation.
Okay, so actually the exactly different is, this is simple, we can write that. This is simple, we can write that. But this is complicated if we want to calculate vector. We need to write all its direction, right? So actually there are maybe many components, x, y, z. This is easy, just a number here. So actually this one is what we use to deal with complicated situation, because this is a scalar. So eventually prefer to solve all electrostatic problem from the scalar potential aspect. That's easy because this is scalar. We don't need to really find where is the direction, where is the propagation angle, where is the component of x, y, z, such things. Okay. Now we just put this back again to prove, because it's E, it's a negative gradient B, and this is a linear operator, so we can switch it. Then sum this together is V, so we become prove it again. So E is negative gradient V. Okay, so this proof is easy, but this part instead of this part. This is easy for us to deal with complicated problems. Okay, because everything is scalar operation. Okay, so we see the keyword. The title say governing equation. So that's the name. I say that's important to you. If you forget everything today, try to remember governing equation here. Okay. Okay. So governing equation is actually very straightforward. So we put what we here. We know the constitute relation D equal to epsilon E. We know that the electric charge is actually the field by the divergent operation. We can find from the identity, the non-identity here. So we can define, actually this is we define an electric field equal to a scalar gradient. Okay, then we put this together. That means like E. Then we put this here. Then put this D into second equation. So that's the divergence and the gradient V. And here is a constant epsilon equal to rho and a negative sign. Then with the other constant here. Then we find this is the. So how can we get this? It's actually just put everything into second equation. Then we got this one. Okay. Then almost like okay. Then we already have this equation. Then we can call a day off today. How about that? Important. Everything is actually use this equation to find its solution. If we already know everything is governed by this one, then we can just solve this equation. Then we can predict everything. So first solution of this one, and then we try to observe any point. It's boundary value problem. And then use a point to deal with unknown coefficient. So then the equation or the situation, AB the scalar. There is no charge. In case there is no charge, if there is no charge, will depends on what aspect. If then there is potential. If there is no charge, there is no potential, right? But there still can find some of that potential. Okay. So we can write the potential call it square or Laplace operation. Some people call it Napier. Okay, so we just call it delta square. Easy to read from the symbol. Okay, so say if there is charge, then no field. Then how about here? Do you see we have charge in the space? There must be no charge here, right? No charge. Propagation problem. So the charge probably very far away, but the energy propagates here. So there still be some propagation problem. Can use this kind of equation, but static. So that's the dynamic in that aspect. We can also solve wave equation from that aspect. Here we just want to mention about electrostatic problem. So this equation, so this equation is so simple, right? We already know the answer. Okay, this is any form. Okay, no, not still here. So actually, I say they love to solve. They don't know the meaning. They just want to find equation, a solution for this equation.
And they must find a general solution. General solution. Is the general solution there exists? Yes, it is. There is a general solution. If you use this equation, that is the solution of this equation. That means if you have any charge, you already know the general solution. Then what you need to do is just do superposition of this charge. So I already know some solution. This must be the solution because I already know the solution. So this must be the exact solution for that. So in that case, this one can just fit into here, and by superposition or difference of charge. And this equation, some people call them Green function. Green's function. Or you can think like this is very general. And the people actually solve this Green function. And then you see Green function is like this way. 1 pi, 1 divided by R unit. And then this is the general solution. Because this is the, if you have charge, you just, so here we can just see, when we deal with one, this one, okay. When we deal with this one, when we do single one, we want to find everything, sum them together. So actually, if we already know this is the solution, then we need to summarize all of them, and then we just do a gradient, then we find the E. So this is the problem we find. Okay, just do the gradient here, and then eventually we find